Hello everyone. Now I'm going to discuss about scientific method. Scientific method research subject का एक topic है. Introduction of scientific method. Scientific method is a systematic and organized process that scientists use to explore observation, solve problems, and test hypotheses through experimentation and evidence. Scientific methods is a systematic. Systematic means step by step process. It is a orderly process. Organized. Organized means a series of steps. वन बाय वन ये जो प्रोसेस है वो कंडक्ट होता है. डेट साइंटिस्ट यूज टू एक्सप्लोर. साइंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं फॉर एक्सप्लोर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड टेस्ट हाइपोथेसिस. एंड व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज अ testable prediction or explanation about the relationship between variables. Hypothesis is a testable prediction. Testable prediction means predict करना means it may be possible or it not be possible. Predict करते हैं हम, तो एक हम जो predict करते हैं उसको हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं about the relationship between variables. हाइपोथेसिस में किसी प्रिडिक्ट करके हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम प्रिडिक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है. दैट इज हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस इन अंडर वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स? द वेरिएबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन चेंज और वेरी. वेरिएबल्स जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं. वेरिएबल्स कैन बी लाइक एज, जेंडर, टेस्ट स्कोर या टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. बहुत से ऐसे टाइप ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर. स्मोकिंग भी एक वेरिएबल है और जो है हम बोल सकते हैं लंग कैंसर इज ऑल्सो वन वेरिएबल्स. देन स्मोकिंग कॉजेज वेरिएबल्स, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्मोकिंग से लंग कैंसर हो सकता है, बट हम कंफर्म तभी देंगे अगर कोई स्मोकर है वो कंटिन्यू जो है वो स्मोक कर रहा है वन डे पे 4 to 5 टाइम्स, तो इट मे बी लीड टू लंग कैंसर. तो ये प्रिडिक्ट है. प्रिडिक्ट हम कर रहे हैं, उसको हम जो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद जो हम प्रूफ करते हैं, दैट इज द हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड थ्रू एविडेंस. हमने एक्सपेरिमेंट, हम देखते हैं कि हाँ वो पर्सन जो क्या कर रहा है, स्मोकर है, स्मोक कर रहा है. और एविडेंस क्या है कि ऑलरेडी हमने ये नोटिस किया कि एविडेंस मीन्स इट इज प्रूफ कि वो पर्सन है, हम डेली उस पर नोटिस करते हैं कि वो जो है वो स्मोक करता है. दैट इज अ हाइपोथेसिस. टेस्ट हाइपोथेसिस. तो scientific methods is a systematic and orderly process that scientists or researcher use to explore observation. Observation means carefully examination, solve problems and test hypotheses through experimentation and evidence. It involves a series of steps such as observation, asking a question, forming a hypothesis, conducting experiment, analyzing data and drawing conclusion. मीन्स हियर कि बहुत सारे स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड्स के. देयर इज सो मेनी स्टेप्स इन दैट इंक्लूड observation, that means carefully examination, asking a questions regarding some problems, forming a hypothesis. हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के बाद उसको हम टेस्ट करते हैं. देन कंडक्टिंग एनी एक्सपेरिमेंट, थ्रू द एक्सपेरिमेंट. देन एनालाइजिंग द डेटा मीन्स वी कैन, जो हम डेटा कलेक्ट किए हैं उस डेटा को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. हम उस डेटा में हम जो है वो आंसर जो है वो फाइंड आउट करते हैं. एंड लास्ट वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन कि वो जो हमने जो डेटा जो है कलेक्ट किया है उसका क्या कंक्लूजन जो है वो हमको जो है वो रिसीव होता है. दैट ऑल साइंटिफिक मेथड. तो साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस दैट साइंटिस्ट और रिसर्चर used to explore observation, solve problems and test hypotheses through experimentation and evidence. There are so many steps of scientific methods in that observation, asking a question, forming a hypothesis, conducting experiment, analyze the data and drawing conclusion. Definition of scientific method. The scientific methods is a logical, step-by-step process used to investigate questions, solve problems, and develop or test theories based on evidence.
The definition of scientific methods, it is defined logical. Logical means based on reason and clear thinking. Logical means it is based on reason or clear thinking. Sometimes logical when it is based on fact, reasoning, as well as step by step thinking. Means logical means here clear thinking, that is a based on reason as well as clear thinking. एंड स्टेप बाय स्टेप इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. कोई भी जो होता है वो ऑर्डरली और सिस्टमैटिक प्रोसेस है. यूज टू इन्वेस्टिगेट. क्यों करते हैं हम लॉजिकली और स्टेप बाय स्टेप? बिकॉज यूज टू इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एज वेल एज डेवलप और टेस्ट थ्योरीज बेस्ड ऑन एविडेंस. जो भी हम थ्योरी जो है वो डेवलप करते हैं बिकॉज अब इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस. फॉर एग्जाम्पल कि suppose nurses observe that patient who listening music before surgery, they feel less anxiety. Means we can develop a theory, the music therapy reduce pre-surgical anxiety. Means अगर एक कोई नर्स है वो ऑब्जर्व करती है पेशेंट को कि सर्जरी होने से पहले वो पेशेंट है म्यूजिक जो है वो लिसनिंग कर रहा है, तो उस कंडीशंस पे देखते हैं कि उस पेशेंट का एंजाइटी लेवल रिड्यूस होता है. दैट मीन्स इट इज डेवलप सम थ्योरीज लाइक द म्यूजिक थेरेपी रिड्यूस प्री सर्जिकल एंजाइटी या रिड्यूस एंजाइटी लेवल बिफोर surgery. Then it is the definition of scientific methods. The scientific method is a logical, step-by-step process used to investigate questions, solve problems, and develop or test theories based on evidence. Evidence means it is a proof. Purpose of scientific methods. Purpose of scientific methods are description, exploration, explanation, prediction, control, prescription, and identification of relationship of fact. First one is a description. Description means to clearly describe what is happening. Description means to clearly describe what is happening. Second one, exploration. Exploration means to investigate, to explore unknown aspect. To investigate unknown aspect. That means aspect means situation, idea or problem. For example, studying a new disease or condition. That means we can investigate unknown aspect, या unknown situation, या unknown problem. That means for example, studying a new disease or condition. It is example. Then explanation. Explanation means to understand or explain why something happening. To understand and explain why something happened. That is the explanation. Means explanation means why something happened, but description means what is happening. Explanation means to understand and explain why something happens. For example, explaining why a fever occurs in infection. It is example explaining why a fever occurs in infection. Then next one is a prediction. Prediction means what will happen in future. Prediction means what will happen in the future. It may be positive or it may be negative. So what will happen in future? It is based on previous observation or evidence. It is based on the previous evidence or proof. For example, if a diabetic patient does not follow the diet plan, if a diabetic patient does not follow the diet plan, you can predict their blood sugar level will increase. That means a prediction. If a diabetic patient does not follow the diet plan, you can predict the blood sugar level will increase. Then control. Control means we can manage or change a situation based on knowledge. To manage or change a situation based on knowledge. For example, controlling pain through specific medication. Control means we can control or manage a particular situation. For example, we can control the pain for a specific medication. Yeah, analgesic, we can give medications like analgesic जिससे reduce हो सकता है pain. That is a control. Then prescription. Prescription means we can suggest action or solution. To suggest actions or solution. For example, advising bed rest for recovery in specific condition. मीन्स बोला गया है कि प्रिस्क्रिप्शन मीन्स वी कैन एडवाइस या वी कैन सजेस्ट एक्शन और सॉल्यूशन.
For example, advising bed rest for recovery in specific condition. Then last one is identification of relationship of facts, means to find how two things are connected. इसमें जो है साइंटिफिक मेथड्स का प्रिंसिपल ये बोलता है कि दो किसी वेरिएबल्स दो कोई फैक्ट है उसके बीच में हम कैसे रिलेशनशिप जो है कनेक्ट होता है टू फाइंड हाउ टू थिंग्स आर कनेक्टेड. फॉर एग्जांपल, रिलेशन बिटवीन पुअर हाइजीन एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ये हम सेकेंड एग्जाम्पल लिख सकते हैं. स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर. इट इज टू थिंग्स. स्मोकिंग से जो है वो लंग कैंसर जो है वो हो सकता है. दैट ऑल द पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, दैट ऑल in that the description, exploration, explanation, prediction, control, prescription and identification of relationship of facts. Characteristics of scientific method. Characteristics of scientific methods are orderly and systematic, control external factors, empirical evidence. Fourth one is assumption and hypothesis. Fifth one is generalized. Sixth one is develop and test theories. And last one is rational. The first one is orderly and systematic. It is a most important characteristics of scientific methods. ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि साइंटिफिक मेथड्स इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. सिस्टमैटिक प्रोसेस मीन्स इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ऑर्डरली, हियरार्किकली या सीरीज ऑफ स्टेप. कोई भी हम जो साइंटिफिक मेथड स्टार्ट करते हैं या रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं, इट शुड बी सिस्टमैटिक. Second one is control external factor. It is important to control external factors that can affect the result. If these factors are not controlled, they can cause error or wrong conclusion. फॉर एग्जाम्पल, अगर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, इनके ऊपर हमको रिसर्च करना है, तो हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स रहेंगे, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये इन सबको हमको जो है इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं करना है. दैट इज अवर एक्सटर्नल फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर suppose you are studying how a new diet affect blood sugar level in diabetic patient. Suppose you are studying how a new diet affect blood sugar level in diabetic patient. So what is the external factors like stress, sleep, exercise and other medicines can also change the blood sugar level. If you don't control this, your result may be not accurate. So control external factors or external variables. It is very important to control outside the external factors because it can affect our result. If these factors are not controlled, they can cause wrong answer or wrong conclusion. The next one is empirical evidence. Empirical means it is a direct observation or experience. Evidence means it is proof. So empirical means direct observation and evidence means proof. For example, post-operative patient complain of feeling fever. Then nurse check the patient temperature with the thermometer and the temperature is 100 degree Fahrenheit. Here what is the empirical? What is the direct observation? तो नर्स ने क्या किया कि यूज करके थर्मामीटर और टेम्परेचर को चेक किया. दैट इज अ एम्पेरिकल मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. एंड व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ ये है कि थर्मामीटर में हमको ये रीडिंग आया कि पेशेंट्स को ऑलरेडी जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है. इट इज अ प्रूफ. So what is the empirical evidence here? The thermometer reading prove the patient has a fever. That is the most important characteristics of scientific methods. That is empirical evidence. Empirical evidence means direct observation or experience. For example, a post-operative patient complain of feeling fever. Then nurse check patient's temperature with a thermometer and the temperature is 100 degree Fahrenheit. And the here empirical evidence is the thermometer reading proof the patient has a fever. The next one is the assumption and hypothesis. Assumption means it is a statement that are proved to be true without any proof. It is based on prior knowledge and experience. For assumption means ऐसा statement जो हमको ये बिलीव करते हैं कि इट इज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ. कि कोई स्टेटमेंट है उसको हम बिलीव कर लेते हैं कि ये ट्रू है, ये राइट है,
without any proof. It is based on our previous experience or knowledge. But what is the hypothesis? The hypothesis means it is a testable prediction statement, explanation about the relations between two or more variables. But the hypothesis क्या है? It is a prediction, it is a testable explanation about the variables. For example, smoking causes lung cancer. Smoking causes lung cancer. तो it is not compulsory कि हर smokers को lung cancer. इट इज अ प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये जो है स्मोकर है तो इसको जो है वो लंग कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दैट इज अ हाइपोथेसिस. बट अजम्पशन, हम कंटिन्यूस किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो 4 to 5 टाइम्स डेली जो है वो स्मोक करता है, तो इट में भी और उसको फ्यूचर पे डायग्नोस्ड होता है लंग कैंसर, तो ऑलरेडी ये क्या है, अजम्पशंस में आएगा. मीन्स कि ऑलरेडी हम उसको विदाउट एनी प्रूफ हम सिर्फ नोटिस कर रहे हैं कि हाँ कि वो डेली स्मोक कर रहा है जिसके कारण से उसको क्या डायग्नोस हुआ है, वो जो हमको प्रूफ की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमको दिख रहा है कि स्मोकिंग से उसको लंग कैंसर हो रहा है. तो अजम्पशन में प्रूफ करने की नीड नहीं है, बट हाइपोथेसिस में किसी चीज को हमको प्रूफ करने की नीड होते हैं जिसको हम टेस्ट के थ्रू या प्रिडिक्ट करें, उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग्स पे हमको जो उसको प्रूफ करना होता है. बट अजम्पशन देयर इज नो नीड टू प्रूव, हमको उसको बिलीव करना है, इट इज अ ट्रू without any proof. It is based on the prior knowledge or experience. The next one is a generalized. What is a generalized? Generalized means it is a applying something to many people, not only one people. Means generalized means सब के लिए है, कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल कि रिसर्चर फाइंड दैट द हैंड वॉशिंग रिड्यूस इन्फेक्शन इन वन हॉस्पिटल. बट इट इज नॉट करेक्ट. क्या हैंड वॉशिंग सिर्फ एक ही हॉस्पिटल पे यूज करते हैं? नो, इट इज अ जनरलाइज्ड प्रोसीजर बिकॉज दे हैंड वॉशिंग रिड्यूस इन्फेक्शन इज एवरी हॉस्पिटल. हैंड वॉशिंग जो है वो एवरी हॉस्पिटल, क्लिनिक, सीएचसी, पीएचसी, हर एक हॉस्पिटल में जो है हम हैंड वॉशिंग प्रोसीजर जो है वो यूज करते हैं फॉर रिड्यूस इन्फेक्शन. दैट इज जनरलाइज्ड. देन डेवलप एंड टेस्ट थ्योरीज. डेवलप एंड टेस्ट थ्योरीज मीन्स इट इज मीन्स हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एविडेंस हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम प्रूफ करके जो है उसको हम डेवलप करते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट कि डेवलप एंड टेस्ट थ्योरीज. फॉर एग्जाम्पल कि here suppose one example, the patient who listening music before surgery feel less anxiety. Then after that, it can be developed the theory. The music therapy reduce pre-surgical anxiety. For example, हम डेवलप एंड टेस्ट थ्योरी पे अगर कोई पेशेंट है वो सर्जरी के लिए जा रहा है, उसके पहले हम उसको म्यूजिक जो है वो सुनने के लिए बोलते हैं, तो देखते हैं कि उसका एंजाइटी लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है. दैट मीन्स द म्यूजिक थेरेपी रिड्यूस प्री सर्जिकल एंजाइटी. इट मीन्स दे टेस्ट दिस थ्योरी बाय कंडक्टिंग रिसर्च. मीन्स हम कोई ऐसे टॉपिक पे हम रिसर्च कर सकते हैं जिसके थ्रू हम कोई न्यू थ्योरीज जो है वो डेवलप कर सकते हैं. हियर एग्जांपल्स पे क्या था कि हम म्यूजिक थेरेपी के थ्रू एंजाइटी लेवल को हम रिड्यूस कर रहे हैं. Then last one is a rational. Rational means it is a reason or logically to understand things. Rational means using reason or logical to understand things. That means, for example, logically हम सोचते हैं कि अगर किसी पेशेंट को फीवर है, तो फीवर है तो हम क्या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा रहेगा कि हमको जो है वो कोल्ड स्पंज है. दैट इज रैशनल. अगर फीवर है तो हम डायरेक्टली एंटीपायरेटिक एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते. फर्स्ट है कि हम उसको कोल्ड स्पंज जो है वो प्रोवाइड करते. दैट इज रैशनल. कोल्ड स्पंज हम देंगे तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा. दैट इज रैशनल. मीन्स इट इज दैट मीन्स रीजन और लॉजिकली टू अंडरस्टैंड थिंग्स. So that all characteristics of scientific methods. The first one is a orderly and systematic. Second is a control external factor, empirical evidence. Then fourth one is a assumption and hypothesis. Fifth one is generalized. Sixth one is a develop and test theories. And seventh one is a rational. That all characteristics of scientific method. Steps of scientific method. Steps of scientific method depend upon the type of study. The type of
research study. The type of study, it may be qualitative and quantitative approaches. Qualitative and quantitative approaches means qualitative approaches means the method to use understand people, thoughts, feeling and experience using word, not number. Qualitative data describe characteristics and observation that are non-numerical, and a quantitative approaches means that are used to collect and analyze the data using number and statistical form. Quantitative data is numerical and measurable. Qualitative data means it is related to characteristics and observation. It is a non-numerical data. But the quantitative data, it is related to numerical and measurable data. Clear? The quantitative means it is related to numerical as well as the measurable data. But the qualitative, it is described characteristics and observation that are non-numerical. In that we can understand people thoughts, feeling and experience using words, not number. That is qualitative. 13 steps of साइंटिफिक मेथड्स आर एस फॉलो. टोटल 13 स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड्स के. अगर आप कंप्लीट जब रिसर्च सब्जेक्ट कंप्लीट आप पढ़ लेंगे तो आपको इजली ये रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड्स है वो सीक्वेंस वाइज है. दैट इज अ सिस्टमैटिक. पहले रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस, अजम्पशन, ये सारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है स्टेप्स को. द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, there are 13 steps of scientific methods are as follow. 13 steps of scientific methods are as follow. First one, selecting the topic and identify the research problem. Second one, define the objectives of study. Third one, review of literature from theory and other related study. Fourth one, define concept and variables to be studied. Fifth one, stating hypothesis about expected observation or phenomena to be studied. And the sixth one is identify assumption and implication. Seventh one, determining the ethical implication of the proposed study. 8. Describing the research design and method of data collection. Next, defining population and sample, planning and data analysis and discussion, collecting data from subject. 12th one, analyzing and interpreting data, and the last one, communicating finding of the study. हम one by one हम देखते हैं 13 steps of scientific methods. 13 steps of scientific methods. In that, the first one is selecting the topic and identify the research problem. First of all, हमको कोई topic select करना है. उसके बाद जो है उस topic में हमको कोई भी problem जो है, research problem जो है वो identify करना है. Then second one is define objectives of the study. Define the objectives of the study according to the research problem है. research problem के according हमको जो है जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिफाइन करना है, किसके ऊपर आपको वर्क करना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स. देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर फ्रॉम थ्योरी एंड अदर रिलेटेड स्टडी. अब जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं, उस रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम जो है प्रीवियस कोई लिटरेचर है क्या. रिव्यू मीन्स होता है इट इज असेसमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर मीन्स इट इज अ रिटन वर्क या प्रिंटेड वर्क या पब्लिश, अनपब्लिश या बुक. इसमें जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या कोई रिव्यू या कोई मैटर अवेलेबल है, उसको हमको जो है वो कलेक्ट करना है. तो पहला टॉपिक सेलेक्ट करना है. टॉपिक में हमको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम. देन उसके बाद हमको क्या करना है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग में हमको रिसर्च प्रॉब्लम जो है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिफाइन करना है. देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग कोई रिव्यू है क्या, कोई जो है दूसरा जो है वो कोई रिटर्न या प्रिंटेड वर्क या कोई ऐसे लिटरेचर है क्या, उसको हमको जो है वो फाइंड आउट करना है. देन नेक्स्ट, डिफाइन द कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल टू बी स्टडी. हमको जो टॉपिक है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस वेरिएबल्स. वेरिएबल्स इट इज अ दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट कैन बी चेंज और वेरी. जो वेरिएबल्स है हम प्रीवियस जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज जो पर्पस है उसमें ऑलरेडी हम डिटेल पढ़े हैं कि व्हाट इज द वेरिएबल्स. तो उस वेरिएबल्स को हमको डिफाइन करना है. देन नेक्स्ट,
stating hypothesis about expected observation or phenomena to be studied. The next hypothesis, hypothesis is a tentative statement. It is a tentative as well as predictive statement between the two or more variables. उस hypothesis जो predicted है उसको expected observation और phenomena to be studied. Then next हमको क्या formulate करना है? Hypothesis. Then next one is identify assumption and implication. Then next हमको assumption means it is a statement that believe it is true without any proof. तो assumption तो इट इज अ 6 पॉइंट. हम सीक्वेंस वाइज याद करते हैं. सीक्वेंस में पहले हम सेलेक्ट करते हैं टॉपिक. अकॉर्डिंग टू टॉपिक वी आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, देन डिफाइन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर. रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो भी हमको वेरिएबल्स है उसको डिफाइन करना है. वेरिएबल्स के बाद हमको जो हाइपोथेसिस है वो फॉर्मुलेट करना है. हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट पॉइंट है अजम्पशन. दैट इज अ 6 पॉइंट. पहला टॉपिक एज वेल एज रिसर्च प्रॉब्लम, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन नेक्स्ट वन इज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन डिफाइन करना है किसको, कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स को, then we can formulate hypothesis as well as assumption. That is a 6 point. Then 7 point, determine the ethical implication of proposed study. जो भी हमने स्टडी, जो भी हम रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग एथिकल इम्प्लीकेशन. एथिकल मीन्स इट इज अ एथिकल वी कैन इन्फॉर्म कंसर्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज अवॉइडिंग हार्म. ये जो प्रपोज स्टडी है उसमें एथिकल जो वैल्यू है, एथिकल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द रिसर्च डिजाइन एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. व्हाट इज द रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अवर रिसर्च वर्क. रिसर्च डिजाइन में हम कंप्लीट अपने रिसर्च वर्क का हम जो है वो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसमें हम व्हाट, व्हेन, वेयर, टाइम, प्लेस, पॉपुलेशन, कब हमको रिसर्च करना है, किस टाइम पे करना है, किस प्लेस पे करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग इज मेंशन इन रिसर्च डिजाइन. इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अवर रिसर्च वर्क. एज वेल एज मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. हम डेटा कलेक्शन करेंगे उसमें कौन कौन से मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स हैं. इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनर, बहुत सारे मेथड्स है जो यूज करते हैं. उसमें हमको आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है. फर्स्ट 7 पॉइंट ethical consideration या ethical implication. The next one is a research design or methods of data collection. Then after that methods of data collections के बाद define population and sample. Population और sample को define करना है. Population means the number of people who live in a particular area, city or country. The number of people who are live in a particular area, city or country. बहुत सारे पीपल, नंबर ऑफ पीपल जो पर्टिकुलर किसी एरिया, सिटी और कंट्री पे रहते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन. बट इन दैट द पॉपुलेशन हमको कौन से सैंपल को जो है सेलेक्ट करें. इस पिक्चर्स पे देख सकते हो, ये दैट इज अ पॉपुलेशन एंड दिस वन इज अ सिंपल सैंपल. जो है हमारे जो क्राइटेरिया जो बनता है, इंक्लूजन क्राइटेरिया जो हमारे रिसर्च के थ्रू, जो हमारे वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम जिसमें हम जो है हमको रिसर्च करना है, दैट इज अ सैंपल. द सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन. Sample means it is a smaller representative unit of a population. Means उस population में ऐसे representative unit जिस पे आपको जो है research करना है, that is sample. तो 3 point ethical consideration, research design as well as methods of data collection and the defined population and sample. Then next one is आपको प्लानिंग करना है कि प्लानिंग क्या करना है कि कैसे डेटा को एनालाइज करना है एज वेल एज डिस्कशन. वी कैन प्लानिंग द डेटा एनालिसिस एंड डिस्कस. अभी प्लानिंग करेंगे, उसके बाद कलेक्ट करना है, देन उसके बाद एनालाइज करना है. तो फर्स्ट देन नेक्स्ट हमको क्या करना है, प्लानिंग फॉर द डेटा एनालिसिस. मीन्स डेटा एनालिसिस मतलब कि हमको किस तरीके से हमको डेटा को जो है एनालाइज करना है, डेटा को किस तरीके से हमको कलेक्ट करना है. देन नेक्स्ट वन इज अ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सब्जेक्ट. अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमको कौन सा मेथड्स यूज करना है डाटा को कलेक्ट करने के. डेटा जो है उसको कलेक्ट करने के लिए कौन सा जो है वो हमको टेक्निक यूज करना है. देन आफ्टर दैट एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा. जो भी जो कलेक्टिंग डाटा है उसको कैसे एनालाइज करना है. एनालाइज करना मीन्स कैसे उसको जो है केयरफुली एग्जामिन करना है, एज वेल एज एक्सप्लेन करना है डायग्राम में, एज वेल एज टेबल फॉर्म में, या उसको कैसे स्टैटिस्टिकल जो है फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करते हैं. देन लास्ट वन इज अ कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग ऑफ द स्टडी. जो भी हमको एनालाइज करने के बाद जो भी हमको फाइंडिंग मिला है उसको हाउ टू कम्युनिकेट टू यूजर, पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज कंज्यूमर.
उसको कम्युनिकेट हम ओरल वे में करते हैं, रिटर्न में करते हैं, एज वेल एज पोस्टर वे पे जो है वो उसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो 7th पॉइंट, एथिकल implication, then research design and method of data collection. Then next one is a define population and sample. After that, planning for data analysis and discussion. After the planning करने के बाद उसको collect करना है, collect करने के बाद उसको analyze करना है data को. Then after that, it is a communicating to the consuming participants as well as the students researcher. The overall जो finding है उसको हमको communicate करना है, जो है researcher जो student है या consumer है या फिर users को. तो दैट आर द 13 स्टेप्स. तो पहला 6 स्टेप में क्या था, सेलेक्ट करना है टॉपिक, आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, देन अकॉर्डिंग टू जो रिसर्च प्रॉब्लम है हमको डिफाइन करना है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन डिफाइन करना है कंसेप्ट एंड वेरिएबल्स को, देन वी कैन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एज वेल एज assumption, ethical consideration, research design, define population and sample, as well as planning for data analysis, as well as collecting the data. As then next one is the analysis and interpreting the data. Then next one is the last one, communicating finding of study. Yeah, communicating research finding of this study. That all 13 steps of scientific methods. हम कंक्लूड करते हैं 13 स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. फर्स्ट जो है टॉपिक जो है हमको सेलेक्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट जो है डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स. देन नेक्स्ट वन इज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है हमको फाइंड आउट करना है रिलेटेड टू टॉपिक. वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है एंड अजम्पशन भी हमको जो है फॉर्मुलेट करना है. देन फर्स्ट इज अ टॉपिक जो है वो टॉपिक एज वेल एज प्रॉब्लम जो है हमको सेलेक्ट करना है, define objectives, review of literature, variable, formulate hypothesis and assumption. Then ethical implication is very important. After that, research design, then define population and sample. Then 3 points में हम planning, collecting and analysis the data. Planning, फिर collecting and analyzing the data. After that, communicating the research finding. That all मीन्स फर्स्ट आपको 6 पॉइंट को आपको याद करना है, टॉपिक, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वेरिएबल, हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन. देन नेक्स्ट 3 पॉइंट्स में आपको एथिकल इम्प्लीकेशन, रिसर्च डिजाइन एंड उसके बाद डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैंपल. देन नेक्स्ट प्लानिंग, कलेक्टिंग एंड analyzing of data. Then last one is the communicating a research finding. Limitation of scientific method. Limitation of scientific method include moral and ethical problems, human complexity, measurement problem, and the last one is external variable control program. So, what is the meaning of limitation? Limitation refers to weakness. They can affect the accuracy and consistency of research finding. जो research finding के through हमको जो हम जो कलेक्ट किए हैं एक्यूरेसी रिजल्ट और कंसिस्टेंसी जो रिसर्च वर्क हम कर रहे हैं उसमें क्या करता है, ये जो है वीकनेस पॉइंट होता है, ये देखें अफेक्ट लिमिटेशन. तो लिमिटेशन इट इज रिलेटेड टू वीकनेस पॉइंट. इन दैट द फर्स्ट वन इज अ मोरल एंड एथिकल प्रॉब्लम्स. मोरल मीन्स दैट इज अ राइट और रॉन्ग. The moral and ethical problems are a limitation of scientific methods because not everything that is scientifically possible is morally right or acceptable. Means बोला गया है कि moral and ethical problems में कि because the not everything is scientifically possible is morally right or acceptable. Science के through में या scientific methods के through में possible नहीं कि everything is a possibility to right as well as acceptable. Moral and ethical problems के through. Then second one is a human complexity. Human complexity. Human are very complex. They have thoughts, emotions, culture, value, behaviors that change from person to person. Because of this, scientific methods cannot always fully understand or predict human behavior. Human complexity, human में बहुत सारे characteristics हैं. थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, कल्चर है, वैल्यू है, बिहेवियरल है, दैट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू हम जो इनके जो थॉट्स हैं, हर एक पर्सन के थॉट्स हैं, इमोशंस है, कल्चर है, इसको कंप्लीटली जो है वो अंडरस्टैंड करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, two patients with the same disease may react different to the same treatment
because of their age, emotion as well as stress. That is a human complexity because the every human ये हर एक person की different different quality है. तो it is a one weakness या it is a one limitation of scientific method. Then next one is a measurement problem. Measurement problems, it is also one limitation of scientific method. Here means scientific methods depend on accurate measurement. But the some things like feeling, pain, intelligence, or satisfaction are hard to measure correctly. Scientific methods, it is a accuracy, depends upon accuracy measurement. But हर एक person के feelings, pain, intelligence या उसके satisfactions को measure करना, it is very difficult. It is a one limitation of scientific method. Then external variable control. So external वेरिएबल कंट्रोल प्रोग्राम्स के थ्रू हम ले सकते हैं कि लिमिटेशन डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग एक्सटर्नल वेरिएबल्स हियर द लिमिटेशन में डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग external variables. For example, suppose you are studying how a new diet affects blood sugar level in diabetic patient. Suppose you are studying how a new diet affects blood sugar level in diabetic patient, but other external factors like stress, sleep, exercise, and other medications can also change blood sugar. If you don't control this, your result may be not accurate. As well as आपके जो रिजल्ट है वो रॉन्ग कंक्लूजन जो है वो लाते हैं. तो दैट इज द एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रोग्राम. बहुत सारे ऐसे जो है जो हम जो है अगर हम अपने एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करते तो उसके रिजल्ट में ये अफेक्ट होता है. तो लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इंक्लूड मोरल एंड एथिकल प्रॉब्लम्स, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, मेजरमेंट प्रॉब्लम्स एंड एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रोग्राम. आज के लेक्चर में हमने साइंटिफिक मेथड के डेफिनेशन, पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स एंड लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स को डील किया. अगर टॉपिक रिलेटेड किसी को डाउट है तो यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट्स बॉक्स. इफ एनीवन वांट्स अ लेक्चर related to any topic, let me know in the comments box.